हाय गाइस, होपफुली यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, ये वीडियो पीसी और लैपटॉप के पासवर्ड रीसेट के हवाले से है। ये वीडियो देखने के बाद आप चौटकियों में किसी भी सिस्टम का पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। मैं इस टूल के बारे में पहले से जानता था, लेकिन मार्केट में इसको शेयर करने से डरता था। बट नाउ इज द टाइम यू गाइज शुड डू डेफिनेटली अबाउट दिस। अभी कुछ महीने पहले मेरे लैपटॉप पर दो पासवर्ड थे। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड था और दूसरा यूजर पासवर्ड था। तो मैंने गलती से पीसी के यूजर का पासवर्ड हटा दिया। देन आई शट डाउन माय सिस्टम। दूसरे दिन जब मैंने पीसी को चलाया तो सिस्टम एक्सेस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड आ गया था, जो पासवर्ड मुझे भूल गया था। माई गोल इज टू रीसेट पासवर्ड विदाउट लॉसिंग माई डेटा। और बेहद दन्नों तक गूगल पर मैसिव रिसर्च करने के बाद मैंने इस सॉफ्टवेयर को ढूंढा। आप लाजी सॉफ्टवेयर को कैसे हासिल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। इसके लिए आपको दूसरे पीसी चाहिए और उस पर आपने ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र खोलना है और उसमें सर्च करना है सॉफ्टवेयर। देन आपने पहले यूआरएल पर क्लिक करना होगा एंड देन यू शुड क्लिक ऑन डाउनलोड। यहाँ पर सॉफ्टवेयर की डिफरेंट वेराइटीज़ आपके सामने दी गई है। दिस सॉफ्ट रिकवरी सूट और फिर है डेटा रिकवरी एंड देन डिस्क इमेज एंड क्लोन एंड देन विंडो रिकवरी। मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड रिकवर करना चाहता हूँ, तो मैं रिकवर पासवर्ड को डाउनलोड करना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाले फ्री हैं, तो मैं सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। मैंने इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। Now I click on Windows button. Then I will search for software which I was already installed. Here is my software. I'll send for LazySoft, and then LazySoft record my password. And I will click on second one. Here I can select my window compatible version. I am using Windows 10 64-bit. You can choose another version of Windows as per your need. I will show you my window version. I'm using Windows 10 Pro and it's system type 64-bit. Then I will click on Windows 10 64-bit, and here I'm using USB. Here I click on yes. It will take few minutes, so I will pause the video. Then you can come to the next window. Here is, I will click on finish simply. You can see the USB icon and also its storage 29.9, and the free also 29.9. I will remove the USB and then re-enter the USB in laptop. What happened? So I re-enter. You can see USB storage. I will click on F12. It's my bootable button of my PC.
आपके सिस्टम में जो बूटेबल बटन हो उसे आप प्रेस करें, चाहे वो F9 हो, F10 हो, F11, F12, कोई भी हो सकता है, F2 भी हो सकता है। सिंपली आप उसे क्लिक करें। अगर आपको दिक्कत आती है इस बटन में तो आप सबसे पहले अपने सिस्टम में बूटेबल डिवाइस से क्लिक करें। यहाँ पर मैंने सिंपल एंटर किया। जैसे आप विंडो करते हैं यूएसबी के थ्रू, उसी तरह बिल्कुल इसका भी सेटअप है। सेम टू सेम वही काम आपने करना होगा इधर भी। Here is my new window. There is a two option. One I will show you also. One is record my password and the second one window product. So I will click on record my password and then I click on next and yes and also next. Here you can see different password, like here is three passwords. One is web password and another one is child password and the third one is administrative password. And the corner, right corner, you can see yes, also yes, and then also yes. It means that here are three active user, his password is active. अगर आप कोई भी पासवर्ड इन यूज़र्स का रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस यूज़र पर क्लिक करें और आप नेक्स्ट कर दें, और आप उसे अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पर क्लिक करें, और अगर आप यूज़र को कोई नया नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, उसका नाम टाइप कर सकते भी हैं। और तीसरा, अगर आप पासवर्ड को रिसेट करना चाहें तो आप यहाँ जो ब्लू बटन है बड़ा वाला राउंड सा टाइप का, आप उस पर क्लिक करें, देन आपके यूज़र का पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। सो मैं अपने केस में पासवर्ड रिमूव नहीं करना चाहता, अगर आप चाहते हैं तो रिमूव करें। सो आई क्लिक ऑन रिबूट माई पीसी, देन क्लिक ऑन यस एंड देन ओके। जब आपका पीसी स्टार्ट हो जाए तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आप वहाँ पर पासवर्ड एंटर ना करें और सिंपल एंटर प्रेस करें तो रिस्टार्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।